Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Are you tired of watching your child struggling with reading? Do you want to help your children to take their first steps into the world of reading the books? Well, don't worry. I'm here to share 5 incredibly easy and effective steps that will help your child to start reading in no time. Say goodbye to frustration and confusion and let's say hello to joy and empowerment of reading. First step है alphabets. ABC. ABC with phonics. ठीक है? Teach them A to Z, all the alphabets with good phonics. सारे लेटर्स का phonic बच्चों को बहुत क्लियर आता हो. एक मरतबा मैं इस वीडियो में दोबारा आपके साथ phonics कर लेती हूँ. आपको सारे phonics दोबारा बता देती हूँ. आई एम इन अ Zoom मीटिंग. ये आपको मेरे ये बार्स से अंदाज़ा हो गया होगा. ओके, इट इज़ A apple, B bee, C carrot, D duck, E elephant, F fish, G girl, H horse, I igloo, J juice, K kite, L leaf, M moon. Very good. My daughter is saying something. Say it loud, Haneen. H yeah, H hen, H house. Very good. Okay, N nest. O octopus. P pencil. Q queen. R rabbit. S sandwich. T tiger. U umbrella. V vest. W watermelon. X x-ray. X just has a sound. There is no beginning word with X, but it has a sound. It is mostly used at the end like box. Okay. Y yogurt and Z zebra. Z जो है लेटर वो वीडियो में इतना शो नहीं हो रहा है. सॉरी, ये कहीं चला गया है. 1 मिनट, इसका क्लियर करते हैं. ओके, अब हमारा ये जो फर्स्ट था स्लाइड, इसके अंदर हमने ये सारे अल्फ़ाबेट्स और उनके फोनिक्स को डिस्कस कर लिया. रीडिंग जो है वो आपके बच्चों को बाय द एज ऑफ 5 years रीडिंग आ जानी चाहिए. Yeah, W for watch. Yeah, but here it is watermelon. Okay, next page, next step है beginning and ending sounds. सारे phonics करने के बाद हम बच्चों को beginning and ending sounds करवाते हैं. Ask them what is this? It is a ball. Let me drop. Good ball. It's a ball. Ball begins with b ball. Yeah, B ball. B ball. Okay, beginning sound b and it ends with l. Ball. Ball. It ends with L. Okay, we will not discuss middle sounds. ठीक है, अभी हम middle sounds we will not introduce. We will just go with beginning and ending sounds. ठीक है, beginning and ending sounds के लिए हम काफ़ी basic words बच्चों के साथ ले लेते हैं, जैसे ball, tree, tree. बच्चों को ये आप ड्रॉ करके भी दे दें तो they will happily do practice with you. या वर्कशीट्स दे दें, गूगल से बहुत अच्छी वर्कशीट्स मिल जाती हैं. ठीक है, tree, and tree begins with T. And when your kids are writing beginning and ending letters, ask them to write both capital and small.
क्योंकि अभी अभी उन्होंने नए नए अल्फ़ाबेट सीखे हैं, तो उन्हें लिखने दें अभी, ठीक है. ओके, बॉल, ट्री, कैट, ख ख cat. Cat begins with k, at ends with t, and it has a very easy vowel a a a. A is very easy vowel. तो फिर cat जब बच्चे beginning and ending letter करें तो आप a introduce करवा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है. cat, k a t t, cat. ठीक है जी. बिगनिंग एंड एंडिंग साउंड्स में हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स वर्ड्स भी ले सकते हैं, थोड़े से, लाइक डक, डक, ड ड, डक ends with k k k. It is a 4-letter word. ठीक है. अब when they are good at beginning and ending sounds, then we will move to our next step. ठीक है. अब अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड हिट द लाइक बटन एज अ टोकन ऑफ appreciation to me, and if you'll appreciate me then I'll make more videos for you. Okay, now the third step would be 3-letter words. अच्छा, ये beginning and ending sounds के लिए ना हमारे पास बुक्स और वर्कशीट्स बहुत अवेलेबल होती हैं. ये देखें, ये जैसे मेरे पास एक बुक है. अगर आपको ये बुक चाहिए तो आई कैन शेयर माई दिस बुक विद यू. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो आई विल गिव दिस बुक टू यू ऑन योर व्हाट्सएप नंबर, और किसी भी तरह ये शेयर हो सकती है, ठीक है. ये देखें, जैसे इसका इसके अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं इस बुक के अंदर. लाइक the kids will do like this. Pencil, pencil begins with p p, pencil. Camera, k k, camera. And nail, it's nail. T t t, table. And x, a x. ठीक है, this is very good book. Let me show you more activities in this book. And as it is a PDF file here, and I don't know why it is not scrolling up and down easily. Let's go this way. Yeah, here are some more beginning and ending sound activities. Pan, p p, pan. And it's bow, b b, bow. Fire, f f, fire. H h, hammer. So these are easy sounds. Now I think it will be okay. Now here they can match beginning sounds. B b, bat, b balloon. It is very good activity for beginning sounds. B bat, b balloon. D d, duck, d dog. H horse, h hat. F flower, f fish. Go green, no need to print this book. They can do it on iPad or on computer screens. It is another activity for matching beginning sounds, and this is at family. When we will do rhyming words, when we will do 3-letter words, then we can use it. K at cat, b at bat, h at hat. Okay, this is the book. If you need this book, you can just tell me in the comment section and I'll share it with you. Okay, here is another activity book, but it is mixed with numbers and other activities. Okay, let's just go back to reading. When your kids are done with beginning and ending sounds and the activities of beginning and ending sounds, then we will move to 3-letter words. ठीक है, ये 3-letter words हम करेंगे. 3-letter words हमने किस तरह से करवाने हैं? beginning and ending sounds के साथ ही हमने 3-letter words को साथ ज्वाइन करके करवाना स्टार्ट कर देना है. 2-letter words को. 2-letter words on,
at, it. Sorry, I said 3-letter words. First we will do 2-letter words, and this is step number 3. Okay, it and to, do, of. ठीक है, ये 2-letter words हम बच्चों को करवाएंगे और 2-letter words के साथ ही हम ज्वाइन करके 3-letter words स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, राइमिंग वर्ड्स के साथ हम 3-letter words स्टार्ट करेंगे. हमारे नेक्स्ट स्टेप होगा राइमिंग वर्ड्स का, और राइमिंग वर्ड्स एंड 3-letter words will go side by side. Like they did at, we will change it to cat, bat, fat, it, sit, hit, bit, ag, bag, bag, flag, sag, tag. Okay, now rhyming words are the words ending with same sounds. ठीक है, and when they are done with this kind of rhyming words, you can move on to more complex rhyming words, some advanced rhyming words like king, king, ring. These are 4-letter words, but they are rhyming words. Swing, it is 5-letter word, but you know, rhyming words play an important role in your kids' mind to understand how spellings go, how spellings work. ठीक है, राइमिंग वर्ड्स की भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ डिफरेंट बुक्स में मिल जाती हैं. अगर आपको वो बुक्स भी चाहिए हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, देन आई विल शेयर देम विद यू. और नेक्स्ट हमारा है साइट वर्ड्स का. साइट वर्ड्स नंबर 5th स्टेप होगा हमारा साइट वर्ड्स का. अब ये साइट वर्ड्स कौन से होने चाहिए? द, it is used repeatedly, but kids are so little to understand its phonic at the age of 5. ठीक है, तो the with capital T and small t ये बच्चों को करवाएं. the, me, he, she, it, like. ठीक है, and this. These are sight words. ठीक है, when they are good at their sight words, then give them small readers to read. Like bob readers होते हैं जिसके अंदर only one sentence is written on a page, और sentences very simple होने चाहिए. और अगर आप खुद भी बच्चों को लिख के दें sentences read करने के लिए, तो beginning में sentences बहुत easy होने चाहिए. This is a cat. I am giving so much space in between two words. ये बच्चों के लिए easy हो जाता है when you give more spaces. अगर यही चीज़ अगर आप इसको इस तरह से लिख के दें बच्चों को, this is a cat with a single space, तो it is hard for them to decode. ठीक है, उन्हें लार्ज फॉन्ट में और स्पेसेस के साथ बड़ा बड़ा लिख के दिया करें. जब बच्चे आपके छोटे हों तो वो उसे इजीली और हैप्पीली रीड करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं बुक्स से बच्चे. ठीक है, अब एक मरतबा हम लोग ये सारे जो स्टेप्स हैं रीडिंग के उनको हम रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, 5 स्टेप्स क्या हैं? 5 स्टेप्स टू स्टार्ट रीडिंग. अल्फाबेट्स with their phonics. Second step is beginning and ending sounds. Third step is 2-letter words, then rhyming words, and after that sight words. अब ये अगर आपके बच्चों को आ गए हैं तो they will be good at reading इंशाल्लाह by the age of 5 or 5.5. तो तब तक उनको रीडिंग अच्छी से आ जानी चाहिए. अब रीडर्स कौन से देने हैं बच्चों को, रीडिंग बच्चों को कैसे करवानी है, वो भी मैं आपके साथ थोड़ी सी वेबसाइट्स शेयर करती हूँ. ये है जिस तरह एक ये रेज किड्स की वेबसाइट है. रेज किड्स की बहुत अच्छी वेबसाइट है. इधर से आप डिफरेंट बुक्स ले सकते हैं. ये लेवल ए है, डबल ए लेवल है ये. इसके अंदर लेवल्स चलते हैं A to Z. ठीक है, डबल ए लेवल है ये. एट द लेक, एट एंड द ये दोनों साइट वर्ड्स हैं और लेक बहुत इजी स्टार्टिंग वर्ड है.
ठीक है, ये आप थोड़ी सी इसके अंदर स्टार्ट में वोकैबुलरी दी होती है और उसके बाद जो है वो बच्चे इस तरह से this swimsuit, they will definitely not read this big word swimsuit, but they will read this. ठीक है, and the pictures will help them to guess the word. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पिक्चर्स के साथ आप बच्चों को दें। स्विम सूट को वो इस तरह से गेस करते हैं, जब वो बच्चे गेस करते हैं तो उनका ब्रेन बहुत अच्छे से वर्क करना स्टार्ट करता है। दिस डॉग, दिस बोट, दिस ट्री। अब इन बुक्स के अंदर वोकैबुलरी भी है और लेवल्स भी हैं। ये मैं आपको रैज किड्स की वेबसाइट का दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से है। आप गूगल पे जाके लिखें रैज किड्स तो आपको ये मिल जाएगी। ये Raz Kids. I'm saying Raz Kids. It is written here Raz. Let me show you Raz. It is like this. Raz Kids. ठीक है, और ये अब इसके अंदर ही मैं आपको दिखाती हूँ कि ये लेवल्स दिए हुए हैं। ठीक है, A to Z के लेवल्स दिए हुए होते हैं, बिगिनिंग लेवल और ये स्टार्टिंग तक। ठीक है, और इसके अलावा एक ऑक्सफोर्ड आउल है, उसकी वेबसाइट इज़ ऑल्सो वेरी अमेजिंग। ये उनकी वेबसाइट, और इसके अंदर स्मॉल रीडर्स हैं जो बच्चे बहुत हैप्पीली रीड करते हैं। बिफ एंड चिप की स्टोरीज़ हैं, बिफ एंड चिप से बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा, ये अभी मेरे साथ एक स्टूडेंट रीड करी थी बुक। अब हम इसको स्टार्टिंग से देख लेते हैं। बिग फीट, बिग फीट, कम एंड लुक एट दिस। अब ये रिपीटेडली वर्ड्स यूज किए हुए हैं इन्होंने फॉर योर चाइल्ड टू लर्न। कम एंड लुक एट दिस, come and look at this. Whose big feet are these? Is it a big monster? Or come and look at this. Is it a big dinosaur? Okay, whose feet are these? ये किसके feet हैं? Kids are surprised कि ये कौन यहाँ से गुजर के गया है? Whose feet are these? Is it a big dinosaur? No. Let's see. Come and look at this. Is it a big giant? No. Is it? Oh, this is Dad. No, it is Dad. Okay, these Oxford Owl books are amazing. Okay, thanks for watching the video and hope to see you in next video. See you soon. Allah Hafiz.